मशरिक़ वस्ती की जंग के बाद ईरान में सियासी इख्तिलाफात रखने वाले भी हुकूमत के शानह बशानह खड़े हो गए। तेहरान में अल-कुद्स रैली में शरीक होने वाली एक खातून ने बताया कि वो हमले के अगले ही दिन यूरोप से ईरान पहुंची। खातून ने कहा कि सहूनियों का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ईरानी सरजमीन पर दफन होगा। इसराइल से लड़ना होगा या उसकी गुलामी कबूल करना होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मशरिक़ वस्ती की जंग के बाद ईरान में सियासी इख्तिलाफात रखने वाले भी हुकूमत के शानह बशानह खड़े हो गए। तेहरान में अल-कुद्स रैली में शरीक होने वाली एक खातून ने बताया कि वो हमले के अगले ही दिन यूरोप से ईरान पहुंची। खातून ने कहा कि सहूनियों का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ईरानी सरजमीन पर दफन होगा। इसराइल से लड़ना होगा या उसकी गुलामी कबूल करना होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मशरिक़ वस्ती की जंग के बाद ईरान में सियासी इख्तिलाफात रखने वाले भी हुकूमत के शानह बशानह खड़े हो गए। तेहरान में अल-कुद्स रैली में शरीक होने वाली एक खातून ने बताया कि वो हमले के अगले ही दिन यूरोप से ईरान पहुंची। खातून ने कहा कि सहूनियों का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ईरानी सरजमीन पर दफन होगा। इसराइल से लड़ना होगा या उसकी गुलामी कबूल करना होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। In this world, you don't have the third option. You either have to fight with them or you have to be their slave. We choose not to be a slave, and that's why the struggle of Iranians, Palestinians, Lebanese, Syrians, we are all connected. It's the same thing. I was living in Europe. I came in the second day of war just to say that I'm here, I'm in my country, it's our land, and here will be your grave. Here will be the grave of anyone who has the plan of Big Israel. Big Israel will be Big Israel. Many people ask me, oh, you are going back to do what? And I said, it's not about doing what, it's about being there. I came here just to be, because me being here is a sense of solidarity, that I'm standing with my people, and it's not like, oh, my people are being under bombardment, I'm just sitting in Europe on, on my sofa and reading the news. No, I couldn't do that. It's all about war against imperialists, because in this world you don't have the third option. You either have to fight with them or you have to be their slave. We choose not to be a slave, and that's why the struggle of Iranians, Palestinians, Lebanese, Syrians, we are all connected. It's the same thing. I was living in Europe. I came in the second day of war just to say that I'm here, I'm in my country, it's our land, and here will be your grave. Here will be the grave of anyone who has the plan of Big Israel. Big Israel will be Big Israel. Many people ask me, oh, you are going back to do what? And I said, it's not about doing what, it's about being there. I came here just to be, because me being here is a sense of solidarity, that I'm standing with my people, and it's not like, oh, my people are being under bombardment, I'm just sitting in Europe on, on my sofa and reading the news. No, I couldn't do that.